एक थाली में कितना क्वांटिटी का राइस देते हैं? 250 ग्राम चावल है, ये ऊपर से गोश्त। हेलो शेफ। हाय, हाउ आर यू? हेलो शेफ, हाउ आर यू? फाइन। चलिए हमको दिखा दीजिए आप कैसे मंदी बनाते हो। एक्चुअली जी इंशाल्लाह बता देंगे आप। अच्छा, तो हमारे साथ में शेफ अहमद है जो कि यहाँ पे मंदी बनाते हैं और आप बता रहे थे कि आप येमेन से हैं, जी। तो हमें बताएंगे कि मंदी होता क्या है? मंदी एक्चुअली जो है ना, मटन बॉईल करते हैं पानी में, बॉईल करके जो मटन का जो पानी होता है उसमें ही हम राइस बनाते हैं, जिसको बोलते हैं रूस मंदी, यानी चावल मंदी का। फिर मटन को उससे अलग निकाल कर मटन अलग से बना लेते हैं। मेन बेस जो है ना राइस है मंदी का। अच्छा, जैसा कि ये राइस। ये जो आप बता रहे हैं कि जो मटन है उसका जो स्टॉक होता जी है हाँ। उसमें चावल पकाते हैं जी और ये पक के तैयार हो चुका जी है, हाँ, पक के और जो मटन के पीसेस है वो अलग निकाल लेते जी हैं। वो अलग निकाल। अभी ये जो है मटन, ये ग्रेवी वाला मटन बना हुआ जी है, ग्रेवी वाला। इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मसाले में? जी हाँ, मसाले में इसमें जो है ना टोटल 27 आइटम्स होते हैं, जिसको बोलते हैं अरबी में गुजार। गुजार बोलते हैं। गुजार। जी हाँ, अरबी वर्ड है गुजार, यानी मिक्स मसाला जो वो बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें 27 आइटम्स होते हैं। 27 मसाले होते जी हैं। हाँ, पूरा ट्राई करके, ये हमारी स्पेशलिटी है। तो जो मेन मंदी डिश है वो मटन की है, मटन की। जी हाँ। लेकिन आजकल और भी वेरिएशन इसके आ गए हैं। यानी कंट्री के हिसाब से, क्योंकि वेज मंदी तो मिडिल ईस्ट में नहीं है, तो अच्छा। हम लोग यहाँ ट्राई किए कि भाई चलो यहाँ वेज वाले भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी मिले तो- कुछ खाने को। जी हाँ, वेज भी जो है ना अपन देंगे वो लोग चलिए हम लोग को दिखाइए कैसे प्लेटिंग करते हैं मंदी का। इंशाल्लाह। तो चावल बासमती इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बस। हाँ, क्या खुशबू आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, जब तक ये तैयार हो रही है, मंदी और बिरयानी में जो फ़र्क है वो यही है कि जी। मंदी में, बिरयानी में मीट और चावल साथ पकाए जाते हैं, जी। इसमें अलग है। अलग है। एक थाली में कितना क्वांटिटी का राइस देते हैं? ये 250। 250 ग्राम चावल है, जी। ऊपर में प्याज भुना हुआ, काजू फ्राइड, ये ऊपर से गोश्त। अब इसमें हमें चाहिए हो, तीनों चीज़ें चाहिए हो, चिकन भी ट्राई करना हो, फिश भी ट्राई जी। करना हो, दिस इज ए चिकन लाइक ए बारबेक्यू सेम। लेकिन जो राइस है वो स्टॉक मटन का ही है, जी हाँ, वो मटन में पकता है। ऊपर में आप चिकन ले लें, मटन ले लें बिल्कुल। या फिश ले लें। बिल्कुल। चलिए हम लोग ऐसा कर दीजिए, हमारे लिए एक पीस चिकन लगा दीजिए, एक पीस मटन लगा दीजिए, ओके। एक पीस फिश लगा दीजिए, ताकि हम तीनों का स्वाद ले सकें। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। This is a real experience. Yes. Huh? So we're going to have mandi, and here comes our mandi. Yes. Oh, that's huge. And this is the rice which is cooked in the stock of the mutton Yes. and topped with some fried onion, cashews, coriander, carrot, And some cucumber, and raisins. And then you have 3 different kinds of chutney. ये है चिकन ग्रेवी एंड दिस इज मिर्ची का सालन एंड दिस इज द टोमेटो बेस्ड ग्रेवी। So there's a deep fried fish, यस, so soft. बोनलेस And here you have mutton. There's huge pieces of mutton. and it's Wow. just fall off the bone kind of a mutton. And this is a deep fried chicken, grilled. Tej patta. The bay leaf is quite widely used here, it seems. Yeah. The flavor of the bay leaf is very nice. So this fish is so soft and crisp. Oh, it's simply amazing. बहुत ही उम्दा। ये टमाटर चटनी है। Yes. Simply the grilled tomatoes, squeezed, with
with garlic and then blended together. Wow. So this mutton is simply falls off the bone. You can just take it out with your 2 fingers. It's so soft. Very soft, tender, juicy, and it's like. See, if you look at it, the meat is pinkish color. Yeah. That's the difference between the pork and the other mutton. And this it cooks faster than the Yes. normal meat. Yes. चलिए मिर्ची का सालन. It's got the sesame. It's got the coconut and the regular masala, garam masalas. Now, Mr. Pai, like, if you go just by the look of the dish, it looks it's not that spicy. It's just fried fish, and the mutton also looks pinkish in color. It's not that spicy. But when you dig in, the spice hits you. Yes. Especially the pepper. Yes. And this cashew, it gives a nice nutty texture to the food. The There's a additional fried- amount of fried onions and cashews. इसमें मज़ा अलग है. No, I really love the rice. The way it is cooked in the stock of the mutton is very flavorful. अनुभव जी, और ये पहला आपका अनुभव बोलिए कैसा है? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा. 250 ग्राम चावल, उसके बाद चिकन, फिश, मटन, 3 तरह का सॉस, चटनी, इतना कुछ डालने के बाद काजू प्याज के साथ में, इतना हैवी खाने के बाद मतलब लोग करते क्या होंगे, वो भी एक क्वेश्चन है. दिस प्लेस इज परफेक्टली लाइक इफ यू फिनिश द फूड एंड यू जस्ट स्लीप हियर. Lie down for a while. Yeah. And also, every mandi can be specific to your requirements. If you want only mutton, You can have they'll give mutton. you only mutton. If you want chicken and mutton, they'll give you like that. Any individual meat of your preference will be given to you. And not to forget, for the vegetarians, they also have a vegetarian mandi. But it's not really authentic. No. But these people make separate rice without the stock. With vegetable stock they make it, not with Okay. the mutton stock. And they will top it with French fries and aloo patty. Oh, so you get the feel of mandi. Yes. That's good. And these are the specialty pans. Is it pan? Yes, that's an Oreo pan. Where is the pan in this? अच्छा, इसके अंदर है पान, गुलकंद, हाँ, गुलकंद, नारियल वो सब मिला के रखा हुआ Yes. है. सही है. मतलब बिल्कुल Innovation. Innovation. Dessert. It's warm, it's gooey and creamy. This was a cheese layer in the middle. And there's a hint of rose flavor. Rose flavor. Yeah. There's a layer of cheese. Yes. And it's melted. Yeah. Oh, it's very nice. I'll try this part. I usually love the crust, Crunchy flavor. crunchy one. Cheers. Oh, this is also sweet. So it's really like black tea, just with water and sugar. That's it. That's it. Oh, it's a beautiful experience. Thank you, Amazing. Sankal. Thank you. Thank you for bringing us to this place. It's I my love the pleasure. whole experience. It's my pleasure. Thank you. But we have to finish this Oreo pan that you have to I would finish. give you the chance to try the Oreo No, pan. no, no. We'll share it. Let's share it.